Good morning students. Today we learn about salt families. We know familiar about common salt that are mostly used in our homes for cookings. Salt families. There are four types of salt families. Sodium salts, for example, sodium chloride, sodium carbonate, sodium nitrate, etc. Calcium salts, calcium chloride, calcium carbonate, etc. Chloride salts, sodium chloride, calcium chloride, potassium chloride, etc. Sulfate salts, sodium sulfate, calcium sulfate, potassium sulfate, etc. Salts are of two types. Types of salts. Types of salts. Salts are of two types. Acidic salts. Acidic salts and basic salts. At first, what are acidic salts? Acidic salts क्या होते हैं? Acidic salts. Acidic salts. Acidic salts are salts which are formed by reaction of strong acid with weak base. For example, hydrochloric acid, a strong acid, with calcium hydroxide, a base. They form calcium chloride and water. So calcium chloride is a strong salt or acidic salt. Calcium chloride is known as a acidic salt. Second example, H2SO4, sulfuric acid with ammonium hydroxide is goes to or formed ammonium sulfate plus water. So ammonium sulfate is a acidic salt. Basic salts. The salts with basic properties are called basic salts. The salts which have basic property are called basic salts, or in other words, the salts which are formed when strong bases react with weak acids are called basic salts. For example, sodium carbonate and potassium phosphate are basic salts because they are formed with the strong base and weak acids. Common salt. In this chapter we learn about common salt. Common salt NaCl, its formula. It is also known as rock salt. It is also known as rock salt because common salt is formed from natural rocks, so it is known as rock salt. It is occurs from nature by the process, by the formation of by the combination of sodium and chlorine. 2NaCl. It is brown in color in nature. नेचुरली अगर इसका कलर देखा जाए तो ब्राउन कलर का होता है. Sodium chloride is very useful. At first we learn about the property and usage of common salt. At first properties of common salt. Common salt की क्या क्या properties होती हैं? First, it is white solid material. ये एक white solid material होता है solid form में. Second thing, its melting point is about 1081 Kelvin. Third, highly soluble in water. वाटर के अंदर फास्टली घुलनशील होता है. यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट. यूजेज कॉमन साल्ट के यूजेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज साल्ट इन फूड. फूड के अंदर साल्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है. सेकेंड थिंग, इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया, लंबे समय तक फूड को प्रिजर्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं पिकल्स के अंदर, अचार में पिकल्स के अंदर साल्ट का अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है, तो क्योंकि लंबे समय तक उसको स्पॉइल नहीं होने देता है, प्रिजर्वेशन के लिए यूजेबल होता है. थर्ड, इट इज यूज्ड मेकिंग कूलिंग एजेंट्स. कूलिंग एजेंट्स मीन्स होता है शीतल के लिए यूज किया जाता है.
फास्ट लीक कूलिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आइस फैक्ट्रीज के अंदर यूज होता है, आइस पे अप्लाई होता है ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए, जल्दी फास्टली मेल्ट ना हो। इसके अलावा हम कई बार आइसक्रीम लेते हैं, वो ठेले वाले से, रेडी वाले से आइसक्रीम के भी हम एंडिंग पॉइंट के ऊपर देखते हैं कुछ साल्टी सा टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें भी साल्ट यूज किया जाता है फास्ट लीक कूलिंग के लिए, कूलिंग एजेंट के फॉर्म के लिए। फोर्थ पॉइंट, इट इज रॉ मटेरियल फॉर कास्टिक सोडा, NaOH एंड ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा। यानी कुछ कॉमन साल्ट, यानी जो घरेलू उत्पाद बनाने के लिए और भी साल्ट हैं उनको बनाने के लिए भी कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। क्लोर एल्केली प्रोसेस, कॉमन साल्ट का हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। क्लोर एल्केली प्रोसेस, एल्केली क्लोर प्रोसेस इज ए इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच when common salt is aqueous solution of common salt that is known as brine, that is also known as brine solution, is used in water solution with electrolysis process. Then anode and cathode are used. Electrolysis process, then at cathode sodium hydroxide is formed, at anode chlorine gas is formed. So why it is known as color alkali process? Because a electrolysis process of sodium chloride in which chlorine and a base is formed, that is known as color alkali process. Because NaOH is a base which is water soluble base, and we know that the bases which are soluble in water are called alkalis. So in this process chlorine and alkalis base is formed, so it process is known as chlor-alkali process. Again, what is chlor-alkali process? Chlor-alkali process is a industrial process in which the sodium chlorides process is done by electrolysis, then chlorine and a base, alkali base is formed, that is known as chlor-alkali process. From chlor-alkali process, three substances are formed: sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. All of these are usable. They have separate use and commonly used. At first we learn about sodium hydroxide, NaOH. Sodium hydroxide, that is generally known as caustic soda. Properties of sodium hydroxide: white greasy solid material. Second thing, its melting point about 591 Kelvin. Third, it is soluble in water. Fourth, it is a crystal form. Usage of caustic soda or sodium hydroxide. First, formation of soaps, paper and silk industries. Second, purification of petroleum. Third, formation of oils. Fourth, it is also used as a laboratory agents. Fifth, it is also used in metallurgy of bauxite. Usage of chlorine gas for water treatment, water का purification करने के लिए. Second thing, manufacturing of bleaching powder, chloroform, etc. Third, manufacturing of PVC, polyvinyl chloride. Manufacturing of pesticides, जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए क्रॉप्स के ऊपर यूज किए जाते हैं. थर्ड, हाइड्रोजन गैस. यूजेज ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में इन रॉकेट्स. सेकेंड थिंग, हाइड्रोजनेशन of vegetable oils to prepare vegetable घी, यानी वनस्पति घी या वेजिटेबल घी, जिसको अपन नॉर्मली डालडा घी बोल देते हैं, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है. थर्ड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स अमोनिया, फॉस्फेट एक्सेट्रा, यानी जो फर्टिलाइजर्स विच आर यूज फॉर ए क्रॉप्स की वृद्धि के लिए जिस फर्टिलाइजर्स को अपन फील्ड्स में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स के रूप को बनाने के लिए यूज किया जाता है. एंड ए कॉमनली यूज ऑफ
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में कॉम्बाइन कर देते हैं, दोनों का भी कॉमनली यूज होता है H2+Cl2, दैट नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूजेबल होते हैं, जिसके भी अपने बहुत से यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं।